Good morning, India. This is Sumit Verma. Good morning, India. This is Anubhav Arora. We welcome you to our show Dreamers Journey. Today, we have with us Miss Neha Chadda, MCA, B.Ed, with more than a decade of experience from corporate world, education, media house, and a content creator. Awarded, pat on the back, and associated with brands like Goodnight, Dyson, Godrej, and many more. We are very happy to have her on our show today. Welcome, Neha, to our show Dreamers Journey today. Thank you, Sumit, and thank you, Anubhav, for having me here. And I've been following this dreamer's journey for so long. And after watching most of my colleagues and friends in here on this podcast, I was eagerly waiting for to be a part. Welcome. Guys, it's a pleasure, ma'am, to have you today on our show. And to start off with, my first question, आपने MCA किया, B.Ed किया, इतनी सारी पढ़ाई करी, कॉर्पोरेट सेक्टर रहा आपका, एजुकेशन रहा, मीडिया हाउस रहा, now a content creator. We would love to know कि what kicked you to come into this, or how did you transform yourself starting from all accolades of education to what you are today. Definitely. So after doing my MCA, I've joined organizations मैंने जहाँ पर बहुत अच्छा मतलब बहुत काम किया, and I've been awarded and accredited on those fields as well. But then this curation और ये content curate करने का idea तब आया because as a new joinee, I always look up to those people who are in their midlife and they have been juggling with their work life and their professional life. तो उनको देख के लगता था कि कैसे मैनेज कर पा रहे उस एज में, बिकॉज हम तो यंग थे, हमारे लिए तो वो एक उन लोगों का वो बैलेंस देखकर भी ऐसा लगता था कि कैसे ये पॉसिबल है कि ये सब लोग इतना अच्छा से काम भी कर पा रहे हैं, ऑल्सो दे आर मैनेजिंग देयर लाइफ. सो एट दिस एज जब हम उस फेज में आ गए, सो आई हैव स्टार्टेड क्यूरेटिंग टू हेल्प दोज हु हैव जस्ट बिगिन देयर जर्नी. बहुत बढ़िया मैम. मैम, ये जो आपका जो फेमस पेज है इंस्टाग्राम पे, नेहाज न्यूज, इसका मीनिंग क्या है मैम? So it is very thoughtfully curated. कुछ लोगों को लगता है बहुत weird सा नेम है. So Neha's News basically means Neha's practical intelligence. So what I've gained through different walks of life after working in different professions, जो मैं लोगों को डील करती थी, जिन लोगों से मैं मिलती थी, तो उसके बाद मेरे को लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस दिया, वो थ्रू माय पेज आई वांटेड टू टू कन्वर्स. ये आपकी जो मिडिल एज मास्टरी है, ये आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं. आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प बिकॉज मैं अभी भी बिलीव करती हूँ कि लोग यूज करते हैं मिड लाइफ क्राइसिस. व्हाई टू से मिड लाइफ क्राइसिस? दिस इज अ न्यू एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. आपकी सेकंड इनिंग्स शुरू होती है, तो उसको क्राइसिस समझ के नहीं वर्क करना चाहिए. इसमें आपको अपनी एनर्जीज और अपने आप को स्लो डाउन ना करते हुए अपने आप को और एनर्जाइज करना चाहिए. कुछ नई लर्निंग्स, कुछ नई हॉबीज को पिक करना चाहिए, सो दैट यू कैन फील energetic. And obviously every part of our life has a new learning to associated to it. Ma'am, are you feeling energetic? yes yes Are you in midlife crisis? no not at all. Not at all. I could see, you have started this podcast. You have been doing such a wonderful job. You have been giving so much to the society, and every day we are, what we give is come back to us as what universe says. मैं आपको एक नया स्टूडेंट दे रहा था. मैंने कहा आप इतना सारी चीजें आप सबको बताते हो, तो you have someone touched down your life. Suffering from midlife crisis, तो आप बता सकते हैं इनको. नहीं, I could feel the energy of his कि he's very much positive and he's giving so much to universe, तो वो तो उनको वापस कर ही रहा है. वो एक्स्ट्रा शाइन तो उनके सब जगह से आती है. And that's for a good laugh, and thank you. It was a beautiful answer, and we do have such kind of laughs at times. So to starting more ahead of it, you are blessed with Smiley and Scissor. Of course. Correct. A beautiful two names, two daughters. And what we know more about you, that yes, they have a good time span gap between both of them, and being blessed with the motherhood. एक बिटिया और दूसरी बिटिया में जो आपका टाइम गैप है, और the blessing of being motherhood with two beautiful daughters, people do come down to you and they have a lot of questions. What I have seen through your podcast, your series, is they take you as a mentor to ask how do you feel after being blessed motherhood after almost like 10 years and more. So we wanted to know कि इस जर्नी को आप कैसे बैलेंस करते हो with yourself, and you are so energetic, you keep on doing a lot of things, you are associated to more than 100 brands. So how do you keep yourself intact with family and with your working? Of course. So yes, I am very much blessed. मेरे पास 2 daughters हैं and they are 11 years apart. And I think this has also come as a blessing क्योंकि my elder one acts like a mentor or a second mother to my younger one.
and to see them bond on different occasions and on different things make me feel that हाँ sibling होना चाहिए. And yes, few mothers who have a single child or जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, they also come up to me to ask कि whether we should have the second child or whether we should not have. So what I suggest to them, you should always have a child when you are mentally prepared for it. अगर आप अंदर से तैयार हैं तभी आप कीजिए. और because even parenting is also a journey, you know, a commitment. आप बच्चा पैदा करके किसी और को उसको hand over करके, you know, this is not what I recommend. Of course, you should also work. You should strike a balance. हर चीज का balance करिए. But अगर आप mentally prepared हैं एक motherhood के लिए, तभी आप next stage में move करिए. नहीं मैम, you work with the 100+ brands, जैसे सारे top के brands, Godrej and Good Night and all that, Mama's Earth. So आपको फैमिली से भी सपोर्ट मिलता है एंड स्पेशली फ्रॉम स्माइली एंड सिजल. Of course. So मैं जैसे बता रही हूँ कि ये सब चीजें भी करना इसलिए पॉसिबल हुआ कि obviously फैमिली का सपोर्ट था. My husband was here. He was here today also. And my elder one, is completely a support system to me. She's the one who pushed me कि नहीं मामा आपको you have to start, you have to do this. And she's the one who come up to me with content creation ideas also because she's at that कंटेंट क्रिएशन age. वो At that age that she's herself is an, you know, जो reels देखकर बहुत ज्यादा absorb कर रहे हैं, तो their friend circle, so they come up with the different ideas. So handling two age group is also a kind of a help to me because I could understand कि उस age group की mothers का क्या issues है, and especially जो इस age group के जो new because my younger was in nursery, तो उसकी age group के mothers का न्यू क्या एज मॉम्स हैं new age और moms हैं. So I'm trying to striking a balance between the two and to figure out that how one should move from this journey, this you know, motherhood age to that motherhood age. बहुत बढ़िया मैम. That's really very good, ma'am. And I think a lot of young mommies and old mommies planning to become again new mommies, you know, they have a good mentor like you because you, So you have that good experience where you keep yourself so balanced, so fresh with your, you know, zeal of nurturing the kids. And secondly, what all time gap के बाद जो एक चीज दोबारा घूम के आती है, again it starts from zero and you have to put in a lot of energy, you have to devote time. और सबसे बड़ी blessing है जैसे आपने बोला कि you know Smiley, Sizzle and your better half, you know, everyone coordinates with you. And we have seen through your good messages, you know, entire families they are summed up, you know, you are giving the message to the society. तो ये बहुत ही अच्छी feeling है what See, we are getting out of it. if I will not put my best foot forward, what will I teach to my daughters? How will they grow into a independent souls? तो अगर मैं काम करूंगी तभी मेरे बच्चों को वो एनर्जी मिलेगी कि आगे हमें को भी लाइफ में कुछ अपने आप को एक्सप्लोर करना है, कुछ नए जगह we have to. So this kind of confidence I need to build up in my daughters, and until and unless I work with all my zeal and all my energies and try to achieve new things every day, they will also fall into the same path. Correct. बहुत very nice answer, ma'am. And I think a lot of all people, those who are following you, looking to you and listening to you, would be taking you as a mentor. और जितने questions अगर आपके पास आए, ऐसा ना हो पता लगे ड्रीमर्स जर्नी वालों को बोल रहे भाई बुला के तो बहुत कुछ बुलवा दिए, बाद में तो आंसर ही नहीं आता. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. I am people's person. You can get in touch with me through my DMs any time of the day. And I would like to, you know, through my page and through my intelligence, I would like to cater each and every query by myself. बहुत बढ़िया मैम. मिड लाइफ में सेल्फ केयर और नए हॉबीज एक्सप्लोर करने में कितना मतलब जरूरी है, बिकॉज एट दिस पर्टिकुलर एज मिड लाइफ के अंदर एक नए हॉबीज और एक नए मतलब पैशन को जो है वो यस. Yeah. So मिड लाइफ में लोग यूजुअली बहुत स्लो डाउन कर जाते हैं. उनको लगता है जैसा लाइफ चल रहा है वी शुड वॉक थ्रू द फ्लो और ये सब. बट हॉबीज अपने आप में आपकी मेंटल और इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay. यू नो पिकिंग अप अ न्यू हॉबीज लाइक ठीक है आपने एक अपने आप को एक पुश दिया कि ठीक है टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर दिस न्यू थिंग टू मी एंड ऐड इट टू माय व्हाटएवर योर जर्नी और अपने रूटीन में आप उसको ऐड करिए. तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है कि एक किसी भी मदर को या किसी भी उस फीमेल को जो उस एज में है जहाँ पर वो कई बार लेफ्ट आउट फील करती है या वो खुद के लिए खुद की वैल्यू ढूंढ रही होती है, तो इस तरह की हॉबीज जब उनको एक्रोलेट्स देती हैं, जब उनको खुशियां देती हैं, सो दैट मीन्स दैट दे आर एबल टू गेट न्यू एनर्जीज एंड वो फिर उस तरीके से अपने लिए काम करना शुरू तो आप अपने पेज पे ऐसा क्या कंटेंट शेयर करते हैं स्पेशली या थ्रू माय स्मॉल जस्ट टू मोटिवेट देम? या थ्रू माय स्मॉल messages I
ट्राई टू क्रिएट सीरीज जहाँ पर मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि कोई बुक उठा के पढ़ लीजिए, कुछ स्टार्ट टेकिंग लेसन्स फॉर एनीथिंग, आप इंस्ट्रूमेंटल सीखिए, कुड डू एनीथिंग, आप नेचर में वॉक लगाने जाइए, इफ यू लव ट्रैकिंग डू इट, start doing it from today because every day counts. अगर आप आज से शुरू करेंगे, so after 5-10 years you see yourself in a different, as a different person. That's very बहुत nice, बढ़िया। ma'am. आप इतना सारा initiative लेते हो community के लिए, and what we have seen, you keep organizing big events, all women events, more than 100 plus women together, and you've done it lately and lastly also. So, first of all, how do you plan all these things? क्योंकि आप तो वैसे ही पूरा दिन बड़ा busy हो, और इससे इन सबको जोड़ के जो मैसेज कम्युनिटी में जाता है, या द वेल बीइंग व्हाट यू ट्राई टू गिव टू द पीपल, women community, getting them together and trying to educate them, what is your vision behind that? So my basic idea is that life is very precious. God has given us this life, और इस लाइफ का कोई सिग्निफिकेंस है, इसको बस ऐसे ही नहीं खत्म कर देना है. Celebrate every movement of your life. So when we do events such like these, we try to inculcate positive vibes among the people, among the neighborhood या friend circles में, या group of women में, so that एक उनका connectivity with each other also gets refreshed. Also they feel motivated, they started performing, कुछ performances करते हैं, कुछ अपने आप को prepare करते हैं, कुछ अपना time देते हैं, तो एक तरीके का एक रिफ्रेशमेंट हो जाता है, एंड दीज मेमोरी स्टेज विद देम फॉर लॉन्ग. फिर वो उसको रिवाइव करते हैं कि वी हैव डन दिस इन दोस इवेंट्स, एंड वी हैव अचीव दिस, एंड this is also kind of an achievement. And when everyone comes together, it is obviously a happy place. Very मतलब inspiring, overall ma'am. you try to motivate them first of all. Secondly, you try to make them believe कि yes they can, something is Of course. hidden in them. As you've been always saying कि जब आप इतने बड़ा गैप मेंटेन करने के बाद भी you got blessed with another daughter and you have that zeal, still you are working and you did not stop, you know after all this. तो जितने लोग आपके साथ जुड़ते हैं, जिनको आप जोड़ते हो, so means you try to push them with a positive thought, life beyond the, I should say, the Age movie marker age or- mark, how different it is and how beautiful it is. It is, of Correct. course. So, ma'am, what is the good message you want to convey to all our viewers, all the especially the mid-age mommies and the mid-age listeners? A good message from your side. So from my side, all I wanted to say, start living your life from today. Pick up a hobby, do something which makes you happy. Find a happy place for yourself, because your happiness is your responsibility. It is not a responsibility for anyone else to make you happy. तो मतलब ये बात बड़ी क्लियर हो गई कि people those who are going to take Miss Neha Chadha as the mentor, मतलब you will remove all their doubts first of all कि how to overcome the midlife crisis, that is very important part of today's world, and everyone suffers the same, like they go through each and Yeah, everything. they go to depression classes, they go to counselor. You need not go to anybody. All you have to just find out, figure out that what makes you happy, and start doing it for yourself. If you are, वो कहते हैं ना कि अगर इंजन ठीक होगा तो पीछे वाले डिब्बे भी ठीक होंगे. हाँ, तो बिल्कुल। अगर आप ठीक रहेंगे तो आपकी फैमिली भी ठीक रहेगी. मैं ये बात देखता रहता हूँ, अनुभव बार बार थोड़ी देर बाद बोलता है मुझे गोवा जाना है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है. Pick up a bag and go. Leave it today, because we have done this. I've recently went to a trip with one of my friend. We picked up the bag and we just left. पर फर्क मैम थोड़ा सा बस यही है, वो सेकंड हाफ जो है ना, वो गोवा का बैग रिवर्स में होता है, इनका बैग फॉरवर्ड होता है. उसको छोड़ के भी चला जा. मैम अनुभव, ये just have your podcast time. थोड़े दिन Because बाद You join अनुभव, हम दोनों भाई इकट्ठे जा रहे होंगे. so you can ask my husband also. Sure, ma'am. Because he was not the person. He couldn't make time. So I picked up a bag. I went with my friend and had a good 5 days break. Where I revived myself as an. और हम वो टॉप पे वो हमने वो जो स्विट्जरलैंड वाला मूव होता है वो हमने मनाली में जाके कर लिया. बहुत बढ़िया मैम. नहीं, जोक्स अपार्ट, मैं वैसे हर 2-4 महीने में जो है काशी चला जाता हूँ 3-4 दिन के लिए अकेला. बिकॉज ऑब्वियसली यू आर अ सोल. आपका अगर सोल वॉन्डरर है, कईयों का सोल वॉन्डरर नहीं होता है, पर अगर आपका सोल वॉन्डरर है तो वो 4 दीवारी में रुकेगा भी नहीं. आपकी अपनी एक सर्च है, एक सर्च क्यूरियोसिटी सर्च होता है. और कुछ लोगों को, आई एम नंबर 5, सो आई एम नेचर्स पर्सन, आई फील हैप्पी इन नेचर. तो मुझे नेचर में जाते ऐसा लगता है जैसे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टिविटी हो गई. So I think that's a beautiful message to the entire community. And yes, people, those who look forward to you as a mentor now, I think there are going to be a lot of DMs.
They are going to surely break the ice, getting connected with you, getting more guided from you, and taking you as a mentor. So we wish you great luck, ma'am, and keep helping the community the same way. People have a lot of ups and downs in life, but Of course. getting down with you, the positivity inside you, and the way you give it back to the society is accolades. All the best, and we hope with the next show coming down very soon with you, you will be as a mentor to a lot of people, those who are watching you today. I am glad to be a part of this. Thank you, Sumit, and thank you, Anubhav, for having me here. Thank you, ma'am. Thank you.